जब तक हमारे बाकी मेंबर्स अगर आते हैं तो ठीक है। हम कोई कन्वर्सेशन डिस्कस कर लेते हैं कि जी जी मैम जरूर। हाई कोर्ट गुरु आपको कैसे हेल्पफुल कर रहा है। चलिए मैम, अगर आपने ये बात की है तो पहले आप ही स्टार्ट लें कि हाई कोर्ट बुरे ने आपको कैसे हेल्प आउट। हम हाई कोर्ट गुरु से काफी जो है अवेयरनेस हुई है मुझे उन चीजों की। जैसे हाई कोर्ट गुरु इंटरनेशनली चीज़ों को देखता है, तो वो मैंने ऐसे कभी पहले देखा नहीं था कि कैसे जो है ज्वाइनिंग करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में एंड हैकाथॉन्स में, कैसे जो है पार्टिसिपेशन होती है। और इसके अलावा जो टीचिंग का यहाँ पे रुझान है स्टूडेंट्स का। और बेसिकली मैं ये चाह रही थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें ऑनलाइन जो है वो स्किल्स जो है सीखी जाएं। तो ये एक तरह का अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने अभी कोई ख़ास जो है इस पे मतलब प्रैक्टिस नहीं की है किसी भी कोडिंग से रिलेटेड। कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया मैंने अभी, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर काम करूंगी आगे। हम कोई इस तरह से कर लेते हैं कि वैसे जनरल कन्वर्सेशन कर लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपसे ही स्टार्ट करती हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एमएस इन यूएस? व्हाट्स योर रीजन, व्हाट्स योर व्हाई फॉर दैट? लाइक टू टेल अस अबाउट। Actually, there are multiple reasons that why I am applying for abroad studies, particularly in US. The US is like a land of opportunities. So I think there are multiple jobs, and I can find some job there. Regarding the education part, I think that USA has the good amount of funding, so maybe I can get some funding, but that's not the main reason. The main reason is that I can get plenty of job opportunities in USA. सर मैम, मेरा ना एक क्वेश्चन है, मेरी आवाज क्लियर है? सर सिकंदर, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी बीच में। सर मैम, आप बताइए मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ओके, तो मैम ना मेरा क्वेश्चन दरअसल ये है कि फर्ज करें आपकी प्रोफेसर के साथ मीटिंग है, तो प्रोफेसर अगर आपसे पूछे कि आप यूएसए क्यों आना चाहते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका क्लियर क्वेश्चन क्लियर समझ नहीं आया एक्चुअली। मेरे ख्याल से आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो उसकी वजह से आवाज़ ना आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो ऐसे बीच में कुछ वर्ड्स आपके ऐसे बहुत कम हो जाते हैं जो आप बोल रहे होते हैं। मैम एक्चुअली मैं गाँव आया हूँ, तो मेरा ना इंटरनेट का इशू है, तो यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, मैं बाहर बैठ के क्लास ले रहा हूँ। चलिए अपने क्वेश्चन में चैट में लिख देता ओके ओके ओके। हाँ मैम, मैंने चैट में क्वेश्चन लिखा है, तो आप उसको आंसर कर सकती हैं। जी जी मैम रोमैसा, मैं वही देख रही थी, आपका क्वेश्चन देख रही थी। आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन? ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम डुओलिंगो में हम जब राइटिंग कर रहे होते हैं, लेट्स से हमने पिक्चर के बारे में लिखना है, या हमने लाइक वो हमें कहते हैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, इस तरह से वाला भी क्वेश्चन होता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब अगर हम टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं देखेंगे तो हम लिखते रहेंगे, तो इससे ये होगा कि ऐसे भी हो सकता है कि समटाइम्स हमारा सेंटेंस अभी कंप्लीट ना हुआ हो और टाइम जो है वो अप हो जाए उस क्वेश्चन के लिए।
तो मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि हम बगैर टाइम को देखे इसको लिखें, तो तो ये सही है, या फिर हम ये कोशिश करें कि जितना भी हम लिखें वो कंप्लीट। तो ये आंसर है। नहीं, आप ये ट्राई करें कि आप जितना भी लिखें वो सही लिखें, ठीक है? क्योंकि आपको उसके मार्क्स से मिलने कि आप गलत मिसस्पेल्ड वर्ड्स लिख रहे हैं या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड्स लिख रहे हैं, तो जो आपको आपके मार्क्स होने हैं वो आपके करेक्ट सेंटेंसेस पे सॉरी, मिलेंगे। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हम मिसस्पेल्ड लिखें या वो लिखें। लेट्स से मैं टाइपिंग कर रही हूँ, ठीक है, सारे सारे स्पेलिंग मैं सही कर रही हूँ, ठीक है, हम्म। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं कर रही। अब उससे ये होता है कि अगर मैं टाइम नहीं देखूंगी तो ऐसे होगा कि लेट से मैं लिखना शुरू हो गई कोई बात, लेकिन टाइम दरमियान में आपको हो गया तो वो वाला सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, ऐसा ही है। तो फिर मैं कह रही हूँ कि ये सही है, या फिर मैं देखूँ कि अच्छा टाइम इतना रह गया, मुझे और नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, इसमें ये है कि पहली बात आपको टाइम देखना ही नहीं है। जब आप टाइम देखते हैं, आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना ना, बस वहाँ पे एक देख लेना कि अच्छा मेरे पास फॉर एग्जांपल इतना टाइम है, 1 मिनट है या जितना भी है। उसके बाद आपने जस्ट लिखना है, ठीक है? अपना एक फ्लो में आपने पिक्चर वाला जो क्वेश्चन होगा उसको लिखें, या जो आपका राइटिंग सैंपल वाला क्वेश्चन है उसको लिखें। अगर टाइम को आप बार बार देखती रहेंगी तो वो आपको इंटरप्ट करेगा, आपके माइंड को, कि अच्छा अभी इतना टाइम रहता है, मेरे पास इतना टाइम रहता है। आप अपनी फ्लो में लिखें, और इस पेस से लिखें, इस इंटेंशन से लिखें कि आप सही लिखेंगे, ठीक है? जो आप लिख रही है ना, वो जैसे आपने बोला है कि उसके स्पेलिंग ठीक होंगे या वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, राइट? तो आई थिंक इसने आपका क्वेश्चन आंसर किया है कि आपने टाइम को नहीं देखना, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट आप लिखें, सही लिखें। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप करेंगी ना, तो आपकी वो एक पेस पर आएगी। आपने कितने प्रैक्टिस टेस्ट अभी दिए हैं, या इट्स योर फर्स्ट टाइम? मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट किए हैं, लेकिन उसमें मेरा स्कोर सही आ रहा है। मुझे असल में कंफ्यूजन ये बस एक ये पॉइंट पे हो रही थी कि भाई ये ज्यादा अच्छी बात है कि मैं फुल फुल सेंटेंसेस लिखूं या लास्ट वाला सेंटेंस अगर एक मेरा मतलब इस तरह से इनकम्प्लीट रह जाए, लेट्स से मैं लिख रही हूँ इट सीम्स लाइक, आगे मैं लिख ही ना सकूं, तो क्या वो इस बात की मेरी नेगेटिव मार्किंग करेगा? इससे बेहतर ये है कि मैं ये सेम लाइक वाला लिखूंगी। तो ये इसी तरह होगा कि मैं देखूंगी ओके अब मेरे पास और सेंटेंस लिखने का टाइम है, तो अगर मैं इस तरह लिख रही हूँ टाइम अप हो जाता है तो क्या इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी? उसकी आपको देखें, जो आपका टाइम लिखते हुए कोई आपका सेंटेंस रह गया है, तो जाहिर है वो उसके मार्क्स आपकी वो कटेंगे, लेकिन जो पीछे आपने ठीक लिखा होगा, दिस इज टोटली नेचुरल ना, कि देखें जब आप लिख रहे हैं तो लिखते हुए अगर टाइम अप हो गया तो जाहिर है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, वो पिछला तो आपका जितना हाफ सेंटेंस था वो रह गया, लेकिन जो उससे पीछे आपने पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे होंगे तो उसके मार्क्स यकीनन आपको मिले। तो ये तो इस तरह से है। मतलब मुझे चाहिए कि मैं टाइम को ना देखूं और मैं बस जितना हो सके उतना लिखती रहूं। यस, यस, बार बार अगर आप टाइम को देखेंगे, अच्छा अब इतना टाइम रह गया, अच्छा अब मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, इतना टाइम रह गया, तो ये आपको बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह से ना वो आपके माइंड को वो कंफ्यूज करता रहेगा कि अच्छा अभी इतना टाइम है, ये फलाना, ठीक है? अच्छा मैंने आज टेस्ट देना है, तो मुझे आप क्या रिकमेंड करेंगी? मतलब आप क्या मुझे कोई यूजफुल टिप देना चाहेंगी जो कि आपने ऑब्जर्व की हो कि ये अच्छी? यस, पहले तो मुझे ये बताएं, आपने जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें स्कोर के क्या आ रहे हैं, अगर आप शेयर करना चाहें। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे स्कोर दिया 120 से 130। फिर मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट किए, तो अब फिर उसके बाद मैंने आर्नो डुओलिंगो वाला टेस्ट दिया तो वहां पर मेरा स्कोर आया 140। तो ग्रेट। आप मुझे बताएंगी कि आपका आर्नो डुओलिंगो वाला कितना स्कोर था और एक्चुअल स्कोर आपका कितना रहा? अच्छा, आर्नो पे मैंने प्रैक्टिस नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे ही प्रैक्टिस की है, ठीक है? और जो मेरे स्कोर्स थे वो इसी तरह से थे, पहले 120, 130, फिर 135, 140, 145। तो मेरा स्कोर जो है वो 135 आया था, ठीक है? और लिसनिंग में मेरे कम मार्क्स आए थे, कि आई डोंट नो, जो मैं
प्रैक्टिस टेस्ट करी थी, जो क्विक प्रैक्टिस टेस्ट थे, मैंने वहीं पे ही अपनी लिसनिंग चेक की थी। ज़ाहिर है वैसे तो आप चेक कर नहीं सकते हो, जब प्रैक्टिस टेस्ट करते हो वो आपको फुल मार्क्स नहीं बताते होते। तो वहाँ पे वो जिस तरह की प्रोनाउंसिएशन वगैरह कर रहे थे एंड ऑल दिस, वो सारा मेरा करेक्ट था। लेकिन आई डोंट नो क्या रीज़न थी, या बाकी बहुत टफ लिसनिंग थी वहाँ पे, मैं कुछ मिस कर गई वर्ड्स वहाँ पे। तो यस, ये है कि आप अपने जो राइटिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन है, मतलब 4 आपके टोटल सेक्शन होते हैं, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो रीडिंग एंड लिसनिंग जो है, इससे आपको ये होता है कि अगर आपके राइटिंग में थोड़े कम आ जाए या स्पीकिंग में कम आ जाए, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो उस चीज़ को। तो इसको आप, इसके पास आपकी प्रैक्टिस के लिए मतलब बहुत ही होता है, ये जो आप अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से प्रैक्टिस कर रहे हो या आप आर्नो से कर रहे हो, तो दोनों आपको यूजफुल है कि अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करो तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, क्योंकि ये आपके स्कोर इम्प्रूवर्स होते हैं, रीडिंग एंड लिसनिंग। बाकी स्पीकिंग और राइटिंग में ये होता है कि वहाँ पे आप थोड़ा लैग कर जाते हो, तो वो उधर से कंपनसेट हो जाता है। सो पहली बात ये कि अपने चारों मॉड्यूल्स को अपने फुली अटेंशन देनी है, ठीक है। एंड वैसे मैंने अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन अगर मैं इसको सम अप करना अच्छा चाहूँ। मैम। जी जी। अच्छा मैम, आपने जो है मुझे ये बताया कि मुझे इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, बट आज मैं लास्ट मिनट की बात कर रही हूँ कि लास्ट लेट्स से कि मैंने 1 आवर बाद टेस्ट देना है या इस तरह, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगी कि मुझे कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए? अच्छा, आपने अगर 1 बार टेस्ट देना है, तो पहली बात है कि अभी आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है या उस टेस्ट को देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं आप। एंड जो प्रिकॉशंस आपने लेने हैं वो यही है कि आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपकी टर्न ऑफ हो। वैसे वो अपनी विंडो में एक दफ़ा पूछते हैं एप्लीकेशंस आपकी, जिस तरह से व्हाट्सएप, अगर आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो उसको आप अनइंस्टॉल करें, उसको बाद में आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा बाकी जो कम्युनिकेशन ऐप्स होते हैं, जिस तरह से डिस्कॉर्ड होती है, स्लैक होता है, इसको आप अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यहाँ से आप चीटिंग कर रहे हैं, ये जैसे जूम है, ठीक है। ये उनकी अगर आप पिन मैसेज देखें ना चैनल में, तो वहाँ पे रूल्स मेंशन्ड है, ठीक है, वहाँ लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकती हैं रूल्स उनके। तो बस आप ये जो चीज़ें हैं इनको अनइंस्टॉल कर दें। एंड जब वो आप ऑफिशियल टेस्ट स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे भी वो आपको एक विंडो आती होती है, विंडो के अंदर आपसे वो पूछते होते हैं कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन जो है वो चल रही है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली बैन कर देंगे। तो अपने केस में मेरे यही था कि मैंने ये कम्युनिकेशन ऐप्स बंद की थी, एंड बाकी वो मैंने चेक कर दिया कि अच्छा जी, आप ऑटोमेटिकली मेरी एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड में चल रही है तो उसको बंद कर दें। बहुत ही सिंपल इन्वायरमेंट था, एंड कोई आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे का टेस्ट है आपका, आपकी आईडी वगैरह देखेंगे वो, जो आपकी आईडी कार्ड होता है उसकी पिक्चर लेंगे, एंड देन आपकी पिक्चर लेंगे, एंड आपको एक वॉक थ्रू भी करवाएंगे, आपके स्पीकर्स वगैरह सारा कुछ चेक करते होते हैं कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड इंटरनेट मेक श्योर करें आपका कि आप वाईफाई यूज़ करें, अगर वाईफाई नहीं यूज़ करें तो अगर आप हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ करें, जैसे भी किसी ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक आपने किया था, तो उसको एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कर लें कि उसकी प्रैक्टिस टेस्ट देके कि मेरा इंटरनेट इतना स्टेबल है, क्योंकि वो आपका इनवैलिड कर देते होते हैं, आपको चांस दे देते होते हैं दोबारा देने का, लेकिन उस टाइम पे अगर इंटरनेट का कनेक्शन का इशू हो तो इनवैलिड कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे भाई के साथ हुआ था। तो यस, एंड बाकी मैम, जी जी। एक और क्वेश्चन है। लेट्स से कि कोई स्टूडेंट है, अब वो टेस्ट कर रहा है, तो ये जो आपने इनवैलिड वाली बात की, अब लेट्स से टेस्ट के दरमियान इनवैलिड कर देता है वो, या लेट्स से किसी ने टेस्ट कंप्लीट कर दिया, उसका सारा कुछ हो गया, तो फिर फिर ये चांस है कि वो आपको 2 दिन बाद कहें कि आपका इनवैलिड हो गया? हाँ नहीं नहीं, वो उसी टाइम पे आपको बता देते होते हैं कि आपका ये इनवैलिडिटी की ये रीज़न है। आप फॉर एग्जांपल, एक ये भी रूल है कि आपने यहाँ ही देखना है, लाइक इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है, घर पे बैठ के आप देते हो, तो वो आपकी ना रिक्रूटिंग लाइक प्रोक्यूटमेंट कर रहे होते हैं, आपको चेक कर रहे होते हैं कैमरा के थ्रू कि आप के रूम में कोई है तो नहीं। तो अकेले रूम में आप हो, ठीक है, काम जगह पे, जहाँ पे कोई बैकग्राउंड नॉइज वगैरह ना हो, क्योंकि जब आप लिसनिंग टेस्ट देंगे तो बैकग्राउंड नॉइज से भी काफ़ी फर्क पड़ता है।
एंड एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे जहाँ पे आप टाइपिंग अपनी अच्छी कर सकें, आपकी टाइपिंग जो है उसकी एक पेस बनी हुई हो, ठीक है। और उसके अलावा यही है कि आप ये स्क्रीन पे देखें, ज़्यादा इधर उधर ना देखें। जैसे कुछ लोग जो हैं वो उनको देखने की आदत होती है सॉरी, इधर उधर। तो इसके दौरान आप बहुत ज़्यादा वो भी डेलिजेंट भी नहीं रहना कि अच्छा अब मैंने अब बिल्कुल रोबोट बन जाना है और मैंने कहीं भी लाइक बिल्कुल आंखें मैंने स्टिल रखनी है, ऐसी चीज़ भी नहीं है। आप बिल्कुल नेचुरली एक्ट करें, लेकिन जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है ना, उसमें अपना आई फ्रेम उसी में रखें, ठीक है, ताकि उनको यही लगे कि अच्छा आप हमारे साथ इंगेज हैं, आप किसी और पर्सन के साथ इंगेज नहीं है, क्योंकि रूम में अगर कोई बैठा है उसके साथ इंगेज नहीं, उनको उस तरह की फील ना आए, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। अच्छा, आप हम जो है आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस मैम ऐसा कवर अप होंगे। यस मैम। चलें, बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए। एंड रूल्स आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा, अब पेड मैसेजेस में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड अभी रिलैक्स माइंड के साथ आप जाएं, कुछ भी पढ़ने की, अभी कुछ भी वजीफ़ा करने की लाइक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस अभी रिलैक्स माइंड के साथ आप जाएं, एक दो राइट। दफा आप अपनी टाइपिंग स्पीड जो है ना वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको थोड़ा टेस्ट पे अच्छी टाइपिंग आए। क्योंकि जैसे जैसे आप रिसेंट थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो उससे थोड़ी एक लेवल अप ही हो जाता है आपका टाइपिंग का। तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ी टाइपिंग की स्पीड चेक कर लें, अपनी इम्प्रूव कर लें। और दूसरी बात ये कि आप फुल स्टॉप और कॉमास वगैरह का भी ध्यान रखें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। चलें, यस मैम, थैंक यू बोथ मैम, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बट एट द एंड ऑफ द डे डू व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। इफ टाइपिंग वर्क्स फॉर यू, अगर अभी आपको लगता है कि मैं टाइपिंग अभी करके मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके करूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट देन डू इट, ठीक है। चीज़ वही करनी होती है जो आपको अपने लिहाज से ठीक लगती है, ठीक है। बाकी दीज आर आर्ट सजेशंस, आप जो इसमें से अच्छी लगती है देन पिक इट अप। बाकी बेस्ट ऑफ। ओके, हम जो है वो आज वैसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं स्पीकिंग। किसी भी जनरल टॉपिक पे कोई कोई आप में से बताएं कि फॉर इंस्टेंस हमें किस टॉपिक पे करनी चाहिए, तो उस पे हम सारे जो है ना वो स्पीकिंग कर लेते हैं। जब मैम स्पीकिंग से याद आया, आपको कोई मुझे पता है आप कहेंगी कि वो टॉपिक रिपीट नहीं होता, बट स्टिल मैं उसकी डिफिकल्टी लेवल लेवल पूछने के लिए कर रही हूँ कि आपको क्या आया था अ, उसमें स्पीकिंग में। अच्छा, मुझे ट्रेंड्स के बारे में आया था कि रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, एंड टॉपिक एज फार एज आई नो तो टॉपिक रिपीट नहीं होते, बट शायद किसी के केस में हो गया हो, किसी की लक हो कि 100 में से एक बंदा हो कि जो टॉपिक रिपीट हो गया हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही है कि टॉपिक रिपीट नहीं होते हैं, लाइक जितना मैंने सुना है। टॉपिक आपके एआई के काम कर रहा होता है, तो वो आपको नया टॉपिक ही ला के देता है। मेरी दफ़ा में ट्रेंड्स के बारे में था कि रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एंड उससे रिलेटेड डिस्कशन थी कि वो क्यों हैं एंड किस तरह के ट्रेंड्स हैं एंड वो कैसा इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ थी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अच्छा, हमारे पास मैम मैमूना ने पिक्चर भेजी है हमें, ठीक है। Describe an environmental issue that concerns you. What steps can individuals and governments take to address this issue? अच्छा, कोई आपके पास ये इन्वायरमेंटल इशू है जो आपको कंसर्निंग लग रहा है, तो उस पे इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे क्या स्टेप्स हैं जो आपको उठाने चाहिए। सो यस, कौन स्टार्ट लेना चाहेगा। मैम मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। चलें, ठीक है। Okay, so the main issue that I think that is in our environment, and it's the most major cause of pollution,
and that is global warming. And a lot of people and their activities are contributing a lot to the global warming. And what happens is that the temperature increases a lot, and due to that reason, a lot of icebergs are melting and our sea levels are increasing, which are very hazardous to our natural life um, and our land areas. So I think that government and people should collaborate together to get this issue resolved. And I think some of the suggestions that I can give here is that they can try to use such fossil fuels, like for example, they should try to use such energy resources which are reusable and are not hazardous to the environment. Another thing I would like to add here is that people should try to use public transport and not their actual, like for example, they shouldn't own a car, and they should try to prefer public transport. And the main thing why I'm saying here is, but the reason why I'm saying that is because when a lot of people are using the same transport, the less fuel is being used, and therefore our pollution is less. Therefore, our global warming is decreased, will not be very harmful, and it will reduce gradually. So our environment will get cleaned over a period of time, and I think that is the two things that people can do. All right, great. And can you add for the government level policies that must be made in order to cater for the environmental issues? Government should try to make such policies which um, which I think government should try to make such policies which throw people no Environmental friendly policies such as reducing the reducing the uh, reduce For the example, reducing uh, the use of plastic okay plastic bags, for instance. yes. okay so can I continue? Yeah, sure, sure. Okay, so government should try to make such policies which impel people to go towards public transport and use less fossil fuel resources, and they should try to use energy that is reusable. So I think such policies can be implemented in our country as well, and there should be because our country also has such things, like for example we have metro, that is a public transport. So we have a lot of facilities. All we need to do is encourage people to go for them, and that will solve the whole issue. Okay, great. But Professor, your fluency was very good, and the grammar was also fine. But yeah, it was a good attempt. Anybody else can try? I think I can try. इतना Oh, अच्छा तो नहीं होगा लेकिन still I will try. no, no. Yep, you can go. One environmental issue that concerns me more is like plastic pollution. The widespread of plastic has increased a lot and has led to increase the contamination in our oceans, and they are harming the marine life, fishes, and all other creatures that live in the ocean. This is the factor that contribute to the life that exists in marine, and also it cause the waste and uh, the increase of waste in public areas such as roads and in front of schools and markets. I think government should ban the plastic shoppers and does bags distribution by maintaining the
uh, maintaining that shopping markets should distribute the environmental friendly shopping bags to buyers. Another thing that I think that can solve this issue is that government should use the biodegradable materials so that we can minimize the use of plastic. Okay, great. Any other buddy who wants to try? Saratnan, I will. please. I will, ma'am. Uh, Nowadays, the main environmental issue is the climate change that I faced and the whole world is facing with it. And due to the climate change, the number of problems occurs by due to this in term of pollution, temperature increase, and the level of sea, and as well as the number of storms, floods are increasing day by day, and the number of agriculture's land going to reduce, and as well as the forest land cutting down by some individuals and government projects. We should reduce it and overcome the climate change by do some major steps in terms of uh, uh, grow number of plants in the free land, as well as the try to focus on don't cut the tree and uprooted the tree of the from the green lands and forests. On the other side, government should take action against those people who try to cutting the agriculture land as well as the uh, forest land. Make a strict rule against them. And other thing is the government should produce give the encouragement by social media and electronics media to give the awareness to the citizens for the climate change and the perspectives and consequences in future that will be destroy over society and over agriculture land. This is the threat for our next generation. So we have to focus collectively to overcome by this to taking major steps and time. Saratnan, it was a good attempt. A really good attempt because you actually introduced a new idea. I think it's about deforestation, and it's a very huge environmental issue. Yeah. So, yes, Sir Shahzor Khan, will you want to try? Yes, Shazad, have you? Ma'am, I just joined. Can you please just give me some background? Yes. Actually, we have a topic of environmental issue, like what is the current environmental issue that needs to be solved, and what will be the individualistic approach or the government approach that needs to be implemented to cater that environmental issue. Environmental issue. Yes. Okay, ma'am, just give me some time to just wind up. Sure.
Anybody know about ozone depletion? Ozone population, yes, ma'am. This is the layer that save the dangerous shine of sun to come reach out the earth. Yes. So this is another pressing issue of ozone layer depletion, and it's like that the refrigerators we have and the electronics we have, they actually emit gases, chlorofluorocarbons, and these gases are Yes, actually causing the depletion of ozone layer. The layer is a form of protection which actually protects our earth from the harmful rays of the sun. So yeah, this ozone layer depletion is one of the biggest issues right now because it is leading to plenty of uh, not only the skin diseases but causing cancers as well. yes, So on individual level, we must avoid electronic devices as much as we can to actually have this harmful impact lessen a bit. And at the government level, the government should try to have implemented the eco-friendly devices or electronics to be used by the citizens, so it shall minimize the impacts of the harmful gases towards the ozone layer depletion. Furthermore, anyone can add to it. yes, ma'am. We can add by the in factor that can be contribute to save the ozone by government can take the action and give the facility to citizen provide good transport system for the of their workplace instead of using individual vehicles and cars that emitted a lot of a huge amount of carbon dioxide that uh, that is destroy the ozone layer, and it is a big according to WH, the carbon dioxide is the most dangerous gas that can that can destroy the ozone. So government have to focus and to give the private transport system internally in the cities for citizens instead of using private vehicles. So, Okay, great. So, okay, let's take it in this way. Like, I think on government level, we have a lot of implications that could be implemented by the government. For instance, they can actually have the eco-friendly, yes, okay, sir, the eco-friendly refrigerators in place and something like that. But on individual level, what we as individual can do, like for instance, we can have some 5 strategies if someone can brainstorm and put it out. Like 5 or 3 or 5 things that we can do. Anyone, if you can have their take. One suggestion or solution can be that if people use cycles instead of personal cars. Okay. Uh, but be specific towards the electronic like devices. How we can minimize or how we can actually what you can say manage the electronic devices so we will have less of the dangerous gases in our environment. a businessman should focus and try to put modern filter on their factories that is beneficial to reduce the carbon dioxide amount, and as well as after the filtration that will be clean, and it doesn't dangerous and destroy the ozone layers comparatively without filter. Okay, actually, I think there was a problem at my end or your end. Actually, I couldn't get your answer. Uh, Ma'am, but it was like we ma'am, have I to use the filters. filters
on the Okay, industry level, okay, okay. electricians But install I filtration am system. actually okay. But Saratnan, I am actually specific towards the like refrigerators, like these sort of devices. So how can we manage these devices in a way that they will actually get less of the gases or the carcinogens into the environment? Any brainstorming, any like idea you come around? For instance, we can use the refrigerator uh, up till this and that time, or something like this. I think we cannot simply cut it out, but we can manage it somehow. But yeah, this is one of the idea at this point, or solution at this point, at how we can manage our devices in a way that they can cater towards the uh, harmful gases spread out. Have no idea about it, but This is a business idea, like. yes. All right. Okay, so let's move towards any other suggestion, any other topic. Such as, or do you want to speak? Yes, ma'am, I want to speak on the climate change, but just let me know like how long I have to talk on this topic. Okay, it's 90 seconds. 1 minute and 90. Okay. So I'm starting. So in my perception, today's the biggest today's problem in environmental issues is the climate change. As we know that it is a long-term shift in the temperature and weather patterns. So since the 19th century, human activities has been primary driver of the climate change, mainly due to the burning of fossil fuels and coals and oil gases. These activities, uh, uh, these activities and such other activities uh, cause damage into the atmosphere, which trap heat and cause the planet to warm. These are some effects of climate change on the environment. We can experiencing a lot of rising in temperatures, uh, a melting ice and sea levels, extreme weathers in a lot of in other part of the world impacts. We can also experience that there is a lot of bad impact on the wildlife and also on the human health. So the solution uh, would be to reduce green gas emissions, like renewable energy. uh, like we have to shift to these type of renewable energy like solar, wind and hydroelectric. And uh, we also have to work on the energy efficiency, improving the energy efficiency of buildings, cars and appliances, for example using LED bulbs and electric vehicles to reduce energy use and emissions. uh, and the other solution would be to like protect and uh, protect and restore forest. Tree as absorb carbon dioxide, so protecting forest and planting new ones help remove CO from the atmosphere. That would be my some solutions. Thank you. Okay, well, thank you, Sir Shazwa. It was a great attempt. Yes. Okay, let's move on to another topic. Uh, why do you want to go to abroad, for instance? What are your aspirations to move abroad? Anybody? Ma'am, could you please repeat the question again?
Yes, sure. Actually, I was asking that what are your aspirations to move abroad? Why you want to move abroad? Ma'am, I would like to contribute to this topic. Sure, sir. Okay. So, taking the decision of moving abroad is because of the current condition at our home country. Pakistan is going through crisis, and most of the population is unemployed. And the graduates, there are a bunch of number of graduates, and they don't have enough. The government doesn't provide enough, employment opportunities for this for the fresh graduates, and that is why they think of the alternative ways. And one of the best ways is to just move abroad for a secure and a safe future. So most of the youngsters and even those who are working in the companies still want to move abroad because their companies doesn't pay in them enough to manage their manage their expenses, that even manage their even the necessities, even their home expenses. So that is why most of the youngsters and jobians want to move abroad for a better future. So most of the students who are fresh graduates, they are looking for the kind of to pursue their higher studies in abroad. And those who are working already as a professional, they are looking for a kind of job and internship opportunities. So I think this is the main reason that we don't have enough opportunities at our home country, that leads most of the aspirants to go abroad for their further studies or for their future job prospects. Okay, great. So there is one reason that due to the lack of opportunities here in Pakistan, we people are actually moving to abroad to explore multiple opportunities and what Allah has planned for us over there. Anybody else could contribute towards this? Yes, ma'am. Sure, sir. I want to go abroad for the higher study because the many developed countries, foreign countries have their well-known education institute and system such as USA, Australia, Canada, Germany, and Japan. After that, if you get the admission and completed your higher study in developed countries, this is the good opportunity for job opportunity in the workplace. Most of company prefer to get the give the job opportunity for the student who completed a foreign degree, and there are a lot of opportunity in terms of the jobs. And other thing is that after completion of your degree, you can earn a good amount of money from the foreign countries instead of home, and because you can easily pay your family expenditure, and as well as you can help your other family members and relatives. This is why I want to go abroad. Okay, great. Anybody else? Ma'am, would you like to give it a try? Okay, everyone have their reasons for going abroad, and some people prefer to explore the job opportunities, while other prefer to study and do a master route and then settle in foreign country. The reason why they think that this is the good idea, because the current situation in our home country is not good, and our country is struggling economically and academically as well. There are good reputed higher research oriented institutes in USA and Canada, so they think that they should study and go abroad for uh,
and experience the international culture and opportunities there. I think that at this point of time, I have decided to go abroad because of two reasons. The first reason is that I want to upskill and learn new knowledge and skills that will help me in getting a good job in a reputed institute at foreign country. And the second reason is that I want to be a good technical and professional person. And I think that the USA has the good industries and that can make me a good technical good programmer. So these are the two reasons why I want to study abroad. Okay, great. So there is actually brain drain in our country. The skilled people and the people are actually moving out because due to lack of opportunities over here and the imbalance or inequality we people are facing in terms of jobs, you can say salaries, or in terms of opportunities over there, and the lack of the quality. But there's another trait over here that there's a lot of leg pulling as well in Pakistan. So, what do you people say about it? I think that people get jealous and and they do leg pulling all over the world. This is not an issue related to Pakistanis. Okay. Anyone else? Ma'am, I would like to contribute. I think the jealousy factor is a natural thing in a human being, but it is mostly, being utilized in our country because our people don't have enough opportunities, don't have enough earning, or have satisfaction of life. So that's why they look for some shortcuts, and for that they have to, put some they have to give disadvantages to other peoples in order to gain promotions and other things. So that is why the politics in the work culture in Pakistan is very common, and it's just because of the low satisfaction at job, or worse work life balance. Because when one person has enough satisfaction of job or enough satisfaction of life, why would he or she think to pull leg of someone else? So I think this is the main reason. That is why people, look for some shortcuts and alternatives to get promotions and other benefits. Yes, that's actually sums up. We are actually habitual of doing shortcuts a lot as a nation, but uh, there are no shortcuts to long-term success. So for that reason, people actually do the leg pulling over here. Uh, but yeah, we have equality of people where there are nice people and where there are. But at the end of the day, you actually have to uh, take responsibility as a responsible citizen to, for instance, advocate for the good and actually dislike the bad things as they are. But yeah, that's what the point is. Ma'am, what do you think, what do you uh, uh, think about the leg pulling? Like, how this works in Pakistan? What do you think about this? Can you repeat? Actually, I didn't hear you. I'm talking about the leg pulling. Like, can you Mhm. explain it little more? Okay, so leg pulling is actually you can't actually have the merit of something, and when you don't have the merit of something, then you actually do the shortcuts and to pull the legs. Mm-hmm. Like it's such type of thing. Like people, why the U.S. citizens or the U.S. people are excellent because they actually
they actually embrace the quality, not the, what you can say, people pleasers or these sort of things. Hmm. So that's why they are on the horizon of what you can say, success and everything like that. So leg pulling is some sort of thing that you don't have the merit to do something, but you are actually uh, not allowing the other person, or you're actually polluting the negativity. That's something that if we sum up. But it's everywhere. It's in US, it's in Pakistan, it's all over the world. It's a natural, it's a human, what you can say, capacity to do it. But yeah, we must have to strive for good things, and we are educated people that we must inculcate a culture where there must be no leg pulling and no that we must harness a culture of teamwork, I must say. Yeah. So, Would you ma'am, there like to is. tell your reasons to go abroad? Okay, well, I have very dispersed reasons, but one of the biggest reason, as already mentioned by fellow participants, is that uh, yeah, for better opportunities over there, and yes, the environment actually, uh, yeah. So that actually my take over that. Anybody else can contribute? We have actually 3 minutes left. Sum up, or if anyone has any question to ask. Ma'am, I मेरा think एक क्वेश्चन था ये सब Yes, शायद और Adnan. आप पूछ लें yeah, ma'am. I जी think मैम मेरा ये क्वेश्चन था there कि is another reason, which is a political reason, Mhm. the political instability. People also want to like leave their own country because of because to escape the political unrest. And if there is not enough rights and injustice in their own country, that is another big reason that they want to leave their own country to go to someone else. Uh, it would be, I think, go off the topic, but injustice is like the current situation in Palestine. Palestine is all the support is from the US side. The big tech giants, the big, for instance, products are actually supporting genocide in Palestine. But the people over there are actually, what you can say, वो अपने काम से काम रखते हैं. In short, like they don't take the extra matters or extra things like that. So they have culture of that thing. That's why they are progressing. But we Pakistanis actually focus on how we can manipulate the environment or manipulate the things. That's why we are here. We actually focus on others very much instead of our own self. So yes. Okay. So मेरा ये क्वेश्चन था मैंने Gigi Sarana. जी मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ना ट्राई किए 2-3 अरनों पे ना डोलिंगो फुल टेस्ट का प्रैक्टिस अब मेरे आ रहे प्रेडिक्टेड स्कोर जो है 125 और 130 के दरमियान में 120 से 130 सरनान सॉरी तो मैं आपको कट अब कर जो रही हूँ. मेजर इशू आ रहा है सरनान सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ. एक्चुअली 50 इट्स 8:58. तो आप अगर अपने क्वेश्चन मुझे डीएम कर दें या स्लैक कर दें तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस करें तभी चलिए ठीक है अभी नेक्स्ट क्लास होने वाली है. सेशन को एंड करें. ठीक है थैंक यू मैम ठीक. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. Thank you so much all. It was a nice participation from your side. And yes, moving forward, we will do the same, inshallah. Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.